Hi, I am Dr. Amandeep Kaur, and today I'll be discussing about the baby skincare, and I'll answer some of the most frequently asked questions from the new parents about their baby skincare routine. बेबी की स्किन ज्यादा डेलिकेट, थिन और सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट स्किन. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर स्पेशल केयर विच इन्वॉल्व्स क्लेंजिंग, moisturizing with hypoallergenic product and a good sun protection. Here are some of the questions I get asked frequently about baby skincare. Yes, because it can lead to sensitivity, irritation, allergies, and respiratory conditions. So, should you avoid all fragrance products? No. Look for this claim, which means the fragrance used is allergen free and cannot cause any irritation and harm in any way. अगर आपका बेबी 6 मंथ या उससे ज्यादा है देन सनस्क्रीन इज मस्ट एवरी डे एवरी सीजन. अगर आपका बेबी 6 मंथ से कम है देन इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने बेबी को डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में ना आने दें एंड प्रोटेक्ट हिम और हर एज मच एज यू कैन. For infants, just once every day is more than enough. Hot water can lead to dry out the baby's sensitive skin, so lukewarm water is the ideal choice for bathing. Moisturization is required in all weathers and climates, be it winters, summers, or humid climate. You can just use a lightweight moisturizer, apply a thin layer on the baby's sensitive skin. But skipping moisturizer is not at all okay. असेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. ये आपकी बेबी की स्किन पे हार्श हो सकते हैं और आपकी बेबी की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई प्रेफर बेबी मसाज ऑयल मेंट फॉर बेबीज एंड किड्स. ये एक बहुत ज्यादा बड़ा कॉमन मिथ है कि अगर हम अपने बेबी का हेड जो है बार बार शेव करेंगे तो जो हेयर ग्रोथ है वो थिक एंड स्ट्रांग हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन. बेबी की हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे और नेचुरल डेवलपमेंट पे, ना कि शेविंग पे. नो, बेबी की स्किन कंपेरेटिवली डेलिकेट होती है, थिन होती है अडल्ट की स्किन से. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज अडल्ट सोप्स एज it may contain harsh chemicals or maybe it is not pH balanced, which can dry out your baby skin and can lead to irritation. Not always. मोस्ट केसेस में बेबी की स्किन पे जो रैश होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, बट इट इज बेस्ट टू गेट इट चेक्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द राइट डायग्नोसिस. अगर आपके बेबी को ये सब सिम्टम्स है जैसे कि रैश है, बम्स हैं, ड्राई स्किन, इची स्किन, रेड स्किन, इन्फ्लेम्ड स्किन, फ्लेकीनेस on face, scalp, arms and legs, it could be eczema. Causes generally include weakened skin barrier, harsh chemicals, allergens, fragrances, temperature, high humidity, temperature changes. These all factors can trigger eczema. Eczema is a common skin condition in babies. In such cases, you should go for moisturizing, identifying and avoiding the trigger cause behind it. If symptoms doesn't relieve, get in touch with a medical practitioner ASAP. Cradle cap is a type of seborrheic dermatitis. It appears as a greasy, scaly patches on the scalp. Wash the scalp with a mild baby shampoo and gently brush away the scales. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, डायपर रैश को प्रिवेंट एंड ट्रीट कैसे करें. डायपर रैश इज कॉज्ड बाय prolonged exposure to wet diapers, yeast or friction. Change the diapers frequently. Wash and pat dry that area. Apply a zinc oxide based diaper rash cream. एंड आप इंश्योर करो कि जो बेबी का डायपर है वो ज़्यादा टाइट ना हो और बेबी उस डायपर में कंफर्टेबल रहे. Dry skin in babies is common due to frequently bathing, and in winters, the baby skin tends to lose moisture and become dry. Apply a good ceramide based moisturizer twice a day. Avoid frequently bathing and avoid harsh chemical or harsh soaps. Heat rash occurs when sweat ducts clogged, leading to red, bumpy skin and blisters. Keep the baby cool and dry. Dress in loose and breathable clothing and avoid heavy creams. It typically resolves in few days. Seek medical advice if it worsens or if the signs of infection appears.
Choose alcohol-free, fragrance-free and hypoallergenic wipes specially designed for newborn skin to avoid any irritation. For sensitive skin, use a super soft cloth with lukewarm water instead. Limit wipe use on the face and broken skin and always pat dry gently. It's all for today. I hope I have cleared all your doubts. If you have any other doubt, comment down and I'll answer them.